number 6, right? Prism. Prism है ना? Okay, this is the new session for your doubt clearing. We are discussing ray optics. The question is, a prism is made of glass of unknown refractive index. A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. By rotating the prism, the minimum angle of deviation is measured to be the minimum angle of deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of material of the prism? Prism. एक तो ये क्वेश्चन है. अच्छा, what is your question? A prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on the face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degrees. What is the refractive index of the material of the prism? The refractive angle of the prism is 60 degrees. If the prism is placed in water, predict the new angle of deviation. हाँ, it's the same question. Don't worry. वो rotation word हटाया हुआ है वहाँ पे, but that's okay. Don't worry about that. Okay? ठीक है? Okay. So what is it? So if the prism is placed, so the refractive angle of the prism is 60 degree. The refracting angle of the prism is 60 degree. Okay. If the prism is placed in water, whose refractive index is 1.33, predict the new minimum angle of deviation of a parallel beam of light,
light. Okay, is this correct? Now let's think of how to solve it. So what are the things that we have been given? If you see, minimum deviation angle means delta and delta m. Delta m is given as 40 degree. Okay. Mu, what is the refractive index of the material? हमको पता नहीं है. So let it be mu. Okay. And so what are the other parameters? आपको A भी दिया है. A is 60 degree. So what will be the mu? Mu क्या होता है? Sin. If you know A plus dm, yes or no? Upon 2 divided by sine of A by 2. Do you know this formula? Check with your textbook. If you already don't know, go to prism. Yes, you should know that. Okay. It's important to revise formulas and also, अच्छा ये derivation भी एग्जाम में आ सकता है आपका प्रिज्म का derivation. There is a good chance that you may get it in your examination. Okay. Now let us see what exactly we get. We get mu as sine. A की वैल्यू कितनी है? 60 plus 40 upon 2 upon sine 60 upon 2. So what is it that we got? Sine 60 plus 40 is 100. So 100 upon 2 is 50 upon sine 30 degree. Okay. So we would write it as sine 50 की value 0.766 होती है and this is 0.5. So your answer will be 1.532. So the material that we used in the prism, its mu is 1.532. Are you okay with this understanding? So इसको हम A mu G भी कह सकते हैं. A mu G माने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर. आर यू क्लियर अबाउट दिस? ऑलराइट. अब क्या हुआ? पानी में डाल दिया. एयर की जगह क्या क्या हुआ? पानी में डाला या नहीं डाला है? तो केस 2, दिस वाज माय केस 1, रिमेंबर. सो केस 2 में क्या होगा? जब आप वाटर के अंदर डाल रहे हो तो एयर हैज बीन रिप्लेस्ड विद वाटर. सो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा? W mu G, that will be again sine. Now this time you can write A dash, yes or no? A will not change, will remain because prism ka material and the conditions is not changing. So A plus, you can say that it is delta dash m. There will be new deviation angle, minimum deviation angle, and upon 2 and then whole upon sine A upon 2. Is that clear or not? Now here, do you already know these things? A plus delta dash m upon 2 कितना हो जाएगा? Can you tell the new conditions? Delta dash m Have you been given? no, so delta dash m
सो न्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमको पता करना है बेसिकली. ओके, सो दिस इज व्हाट we do not know already. So let us simply, but we know certain data. What will be W mu g? Can you tell? Already अपने को A mu W पता है ना, तो यहाँ लिख लो A mu W is 1.33. yes. और अब तो W mu g क्या हो जाएगा? 1 point W mu z would be A mu z upon A mu W. हाँ, so 1.53 upon 1.33. Okay, so what shall we do? So एक तो ये डिस्कशन हो गया. सो डब्ल्यू म्यूजी अपने लिख दो यहाँ पे 1.53 अपॉन 1.33 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए बाई 2. तो साइन ए की वैल्यू कितनी थी? 60. तो 60 अपॉन 2 यहाँ पे 30 डिग्री लिख लो. सो वी विल गेट साइन ए प्लस डेल्टा डैश एम अपॉन 2. ओके, सो इसको तो साइन 30 को अगेन 1/2 लिख दो. सो 1.53 मल्टीप्लाइड बाई 0.5. 1/2 मीन्स 0.5 अपॉन 1.33 is sin a plus delta dash m upon 2. Okay, and the value of this is 0.5759 equal to sin a plus delta dash m upon 2. Okay, so what shall we get? A plus delta dash m upon 2 equal to sin inverse 0.5759. Okay, a plus delta dash m upon 2 and sin inverse 0.57 roughly कितना होता है? 35 degree and something, 35 point exact we can find. So we can actually do sin inverse of what? 0.5759 and our answer would be 35.16. तो लिख देते हैं इसको. So 35.16. Okay, so a plus delta dash m is twice of 35.16, so that would be 70.32. Okay, 70.32 degree. ओके, और a की वैल्यू कितनी थी हमारी? 60. So delta dash m would be 70.32 degree minus 60 degree. So your answer would be 10 degree, 10.32. Okay, have you understood it now? 32 degree. So this is our discussion and the closure of this problem, right? Any more problems? 9.11. Okay. Is it a compound microscope thing? Okay. Let us write down the problems first. Question. A compound microscope consists of an objective
lens consists of an objective lens of focal length 6.25 centimeter, right? Separated, of 2 centimeters. हाँ, eyepiece of focal length, right? 6.25 है ना? Objective lens to Objective lens of focal length 2.0, right? Objective lens of focal length 2.0 centimeter. Now is correct? yes. And an eyepiece, यहाँ पे लिखेंगे हम, and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeter. Okay, how far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at A, the least distance of distinct vision. The least distance of distinct vision, that is your D. And what is the value of D? 25 centimeter. Okay, and B at infinity. Now go back to your basics and let us analyze. So it's a case of microscope. Okay, and clearly there is an objective lens as well as eyepiece. So let us write down the data. So data क्या क्या है हमारे पास? F of objective is 2.0 centimeter and दूसरा जो eyepiece है उसका फोकल लेंथ कितना है? 6.25. ओके, और आपके पास ए में VE दिया हुआ है. VE कितना है? नेगेटिव 25. ओके, so we can easily see that 1 upon VE minus 1 upon UE would be 1 upon FE. Yes or no? तो यहाँ से अब आपके पास VE की वैल्यू लिखो 1 upon minus 25 minus 1 upon UE and FE तो पॉजिटिव ही होगा तो 1 upon 6.25. ओके, सो माई UE कितना आएगा? 1 upon UE would be negative 1 upon 6.25 minus 1 upon 25. ओके, 25 आपका LCM आ गया. सो 4 जा नेगेटिव 4 नेगेटिव 1, so it is negative 5 upon 25. Now what is your UE? So UE has become negative 5 centimeter. UE क्लियर पता लग गया, माने जो eyepiece है कि so we can say that
UE is -5 centimeter, right? Yes or no? And then what else we can write? अब डिस्टेंस हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड. सो ऑब्जेक्टिव से, यहां आपका ऑब्जेक्टिव इधर होता है, ओके, और ये आई इधर होता है कि नहीं? सो ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई है, यस और नो? सो और आपका ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट? सो दिस इज योर यूओ. सो इफ यू सी, हमको यहाँ पे दिया हुआ है separated by a distance of 15 centimeter. If you read, eyepiece of the compound micro consists of an objective lens of focal length इतने and an eyepiece of focal length इतने separated by a distance. So this distance is 15. Are you clear about it or not? So what will be your VO? Can you tell me? भाई आपका ये इमेज कहीं यहाँ पे कहीं कुछ बनेगा, मान लो ये इमेज बना आपका, यहाँ ये भी ई होगा ना, और आप देखो जो यू ये यू ओ है, ओके हैं, सो और टोटल डिस्टेंस है 15, ओके. सो व्हाट विल बी योर वीओ विल बी दिस हैं, और यूई कितना है? यूई विल बी दिस, फॉर दिस विल बी योर यूई हैं. So this UE is 5. So how much is VO? 10. Yes or no? So आप यहाँ पे easily लिख सकते हो that your VO is 10 centimeter. Now do you see V1 upon VO minus 1 upon UO will be 1 upon FO? Clear or not? So let's put up the values. So if you put the values, what will be your answer? 1 upon V नोट की वैल्यू रख दो 10, यस, ओके, एंड देन माइनस 1 अपॉन यू नोट इज समथिंग दैट वी नीड टू, एंड 1 अपॉन एफओ की वैल्यू क्या थी? एफओ इज 2 सेंटीमीटर, सो लिख दो यहाँ 2. सो 1 अपॉन यू नोट विल बी 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 2, यस और नो? सो 10, so 1 ja minus 5, so -4 upon 10. हाँ या ना? So what is the value of u naught? U naught is 10 upon -4, which is -2.5, 2.25 है, 2. हाँ, I think 2.5 only. Okay. So ये आपका u naught आ गया. So one answer is this. Yes. एक आंसर क्लियर हो गया. अब आ जाते हैं बी वाले पोर्शन पे. सो बी पे हमको क्या बोला है? आपका वी नोट ई कहाँ बनेगा? वी नोट वी ई रादर, फाइनल जो इमेज है कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी. यस, इट इज गिवन. एंड देन आपका जो माइनस यू ई है, that would become f of e, yes, which is 6.25 centimeter. Understand or not? In this case आपकी v नोट क्या हो जाएगी? v नोट 15 में से घटा दो 6.25 को, तो आपका 8.75 सेंटीमीटर पे v नोट आ गया. yes or no? तो 1 अपॉन v नोट माइनस 1 अपॉन u नोट विल बी 1 अपॉन f नोट. टेल मी yes or no? तो यहाँ पे वैल्यू रखो. 1 अपॉन यू नोट क्या आ जाएगा? 1 अपॉन वी नोट माइनस 1 अपॉन एफ नोट.
Let's try to write down the value. 8.75, 1 upon 8.75, correct, minus एंड एफ नोट क्या था आपका 1 अपॉन 2.0, दोनों पॉजिटिव ही होंगे, सो ये आ गया 2 माइनस 8.75 अपॉन 17.5। तो ये आंसर आपका क्या निकला है, नेगेटिव 17.5, नहीं हाँ ये आ गया 6.75 नेगेटिव है अपॉन 17.51 अपॉन यू नोट। तो यू नोट की वैल्यू क्या आ गई 17.5 अपॉन 6.75 विद नेगेटिव साइन। सो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, नेगेटिव 2.59। ओके, सो ये यू नोट आ जाएगा आपका। सो आपकी हमसे और क्या पूछा है, व्हाट, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, रिमेंबर, यहाँ पे लिख लो, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप है। तो ये तो आपने ऑलरेडी किया ही हुआ है कि नहीं, सो यू कैन इजीली नो दिस। सो अच्छा, पहले वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, इसको अलग अलग ही कर लेते हैं ना। ए केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या थी, याद है, मैग्नीफाइंग जब डी डिस्टेंस पे बनती है मैग्नीफाइंग पावर, सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, it contained 1 plus d by fe, do you remember, it was fundamentally v naught upon u naught into 1 plus d by fe, if you remember this। और इसमें तुम वैल्यू रख दो अपनी, v naught was your 10 और यहाँ 2.5, बेसिकली जो आपकी हाइट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंसेस के रेशो में होती हैं, बिकॉज जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे हमने जो ये बनाया है ऐसे बनाते हैं ना हम, तो ये इस टाइप से, तो ये तुम्हारा वी नोट है, ये यू नोट है, ये एच, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या होगा, वी नोट अपॉन यू नोट, तो आप इजीली रख सकते हो ना इसको, हैं। तो दिस 1 प्लस डी की वैल्यू क्या थी 25 और एफ की 6.25, तो आपको क्या मिला 4 तो यहाँ से मिला, 1 प्लस 4 यहाँ से मिला, सो कितना हुआ टोटल, दिस वाज 20, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर 20 की मिल गई यहाँ पे ए के केस में। और बी के केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी होएगी, एनी आइडिया, इसमें तो बिकॉज आपका वी नोट अपॉन यू नोट, एक तो ये रहेगा मल्टीप्लाइड बाई वी ई अपॉन यू ई, यस और नो, है ना। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे 8.75 अपॉन 2.59 इंटू 25 अपॉन 6.25, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 13.51, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो आज इसको यहीं क्लोज कर देते हैं, ठीक है, विल कंटिन्यू, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ओके।